A very good morning to you all, children. So, initially, we have just completed the chapter articles from your grammar book. Now, we'll be doing chapter number 20 in your grammar book, which is prepositions. So, today we'll start prepositions. What are prepositions? So, preposition is a word that shows relationship between a noun and pronoun. So, it definitely joins noun and pronoun. Generally, they are the word like in, on, at, for, to, with, अंडर, ओवर, बिटवीन. सो बेसिकली जो दो सेंटेंसेस होते हैं वो दो सेंटेंसेस उसमें नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो देर इज़ अ रिलेशनशिप दैट इज़ शोन बाय प्रपोजिशंस. सो इन दिस चैप्टर वील लर्न मोर अबाउट प्रपोजिशंस. So first of all you have to look the pictures carefully. There are pictures in your book which you have to look. यहाँ पर देखिए, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा what are prepositions. Like first picture is on. The cat is on the box. The cat is under the table. The cat is behind the box. So it is on, under, behind, between. These are all the words which are preposition. In front of, around. So किसी भी चीज़ के अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, चारों तरफ. This is all, these are the words of prepositions. To know it more carefully and properly, there are some particular words which are shown here. In and on denote a particular position. So when we are talking about in and on, it is denoting a particular position. So in, into, out of, these are prepositions. It is showing a particular position. On, upon, under. ये जो red dots बने हैं बेटा देखो आप लोग कि ये box के अंदर बने. One red dot is inside the box. It is in, अंदर. इनटू के तरफ, किसी चीज़ की तरफ. इनटू. आउट ऑफ, किसी चीज़ से बाहर जाने के बोलते हैं आउट ऑफ. ऑन मतलब ऊपर. अपॉन भी ऊपर ही होता है बट इट इज़ बेसिकली यूज्ड एज पर द सेंटेंस. अंडर मतलब उसके नीचे. सो दीज आर द prepositions. So now what we'll do, we'll read the sentences carefully. So in your grammar book, when you open the page number 81 of your grammar book, so here is the exercise. First of all, we'll read some examples. Whenever we read some examples, we have to look for the underlined words. जो ये underlined words हैं वही उस topic को describe करते हैं. जैसे in, into, out of. In these words, they are highlighted, they are underlined. So these are the words which are prepositions. So while we are reading, we'll just look at it. So first sentence is the rat is in the trap. The rat is in the trap. So in is what? In is preposition. ये noun और pronoun के बीच में relationship बता रहा है. rat जो noun है is in the trap. वो trap के अंदर है. So it is preposition. In preposition है. ठीक है. The next sentence is the rat came into the trap. So next is into. Into is again a preposition. The rat came out of the trap. So rat trap से बाहर आ गया. So if it would have been the rat came out, तो नहीं पता चलता. आउट ऑफ द ट्रैप, वो ट्रैप के बाहर आया. सो दो सेंटेंसेस के बीच में, दो स्मॉल सेंटेंसेस के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ ऑल प्रपोजिशन. सो यू कैन जस्ट सी दैट अ प्रपोजिशन कैन चेंज अ मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. अगर हम सिर्फ ये बोलते द रैट केम आउट तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता. द रैट केम आउट ऑफ द ट्रैप, ट्रैप से बाहर आया. सो वी हैव यूज दिस वर्ड्स इन टू, आउट ऑफ, इन एज प्रपोजिशंस. ठीक है. What is the definition of preposition? Preposition is a word that shows a relationship between noun and pronoun and other words in a sentence. preposition के बिना sentence अधूरा होता है. इसी की वजह से noun, pronoun और दूसरे words के बीच में relationship build होता है. Examples हैं in, on, at, for, to, with, under, over, between, among, near, behind, above, etc. So children, you have to learn these prepositions. आपको इन्हें learn करना है, आपको इन्हें याद भी करना है, इन्हें पढ़ना भी है, so that you are able to know what they are. Prepositions generally come before a noun in a sentence. Generally ये noun से पहले आते हैं. जैसे राम is sitting between तानिया and गुरदीप. So तानिया एंड गुरदीप से पहले between आया. So it is they have come before the noun. राम is sitting among his friends. वो अपने दोस्तों के साथ बैठा है. among his friends. So among is also here a preposition. So among, behind, above, since, to, into, above, ये सारे क्या हैं? behind. These are all preposition.
So now there is a small paragraph, and what you have to do, you have to circle the prepositions in this paragraph. So children, you have to do this yourself. This will be your homework for today. The national of the, say for example, the national anthem of India was originally composed in Bengali by Rabindranath Tagore. So it was originally composed in Bengali by the national anthem of India. Of is what? Of क्या है? Preposition. By Rabindranath Tagore. So by is also preposition. By, of, ये words को हम circle करेंगे. Its Hindi version was adopted by the Constituent Assembly as national anthem of India on 24th January 1950. So its Hindi version was adopted by. By is again a preposition. I'm just explaining you so that you can do it yourself. Okay, by the Constituent Assembly as the national anthem of India. किसका है national anthem? Of India. So of is again a preposition. India on 24th January. On 24th January. So on is again a preposition. It was first sung on 21st December. So फिर on again फिर उसको circle करना है. At the Calcutta session. So at is also preposition. At the Calcutta session of the Indian National Congress. So of, ये सबके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है कि कहाँ किया था, कब किया था. ऑफ, ऑन, एट, ये वर्ड्स ही प्रपोजिशन है. So you will write it like that. You have to circle the prepositions. Now next we move on the filling the blanks with suitable prepositions. I am telling you with examples. Few examples I will tell you so that you are able to do it yourselves. It is very easy. There is list of preposition आपको वहाँ book में दिया हुआ है. उसी में से आपको words जो sense बनाते हैं उसी को आपको you have to fill it. So filling the blanks with suitable preposition. First I'll do it for you. Next all you have to do, and I will provide you all the notes. You can check it, cross check it with my notes also. And first of all you will try. Like first is the Taj Mahal is the pinnacle dash Mughal architecture. It was built dash the Mughal emperor Shah Jahan dash memory dash his queen Mumtaz Mahal. It is situated dash Agra. So what we'll fill in the blanks. What we'll do, the Taj Mahal is the pinnacle of Mughal architecture. It was built by. So we'll write by. Then next is Shah Jahan in the memory. So in is again a preposition of Queen Mumtaz Mahal. So we'll write of because of is also a preposition. It is situated in Agra. So all these words which we have filled in this filling the blank, these are all prepositions. So like that only you have to do the next other filling the blanks also. Second one I am not telling you because you have to do it yourself. Next is circle the correct prepositions. The next exercise is circle the correct prepositions. So what you have to do, you have to circle the correct prepositions. So I'll just explain you few of these also. First is they have parked the car at or behind the house. So whatever is the correct form you have to circle it. So first is they have parked the car behind the house. At the house नहीं होगा. They have parked the car behind the house because it is making sense. So behind is a preposition. Next is he went up या on the stairs. So up होगा या on होगा? On नहीं होगा. He went up the stairs. वो stairs से ऊपर चढ़ा. So this is also a preposition. We are sitting in the room या into the room? In the room. हम room के अंदर बैठे हैं. So in will be the right preposition. She came into the room. So into the room. Into जो है it is right preposition. The cat jumped upon the table. So on the table upon the table. So we will circle upon. So like this you have to circle the correct prepositions. Now next is fill in the blanks with suitable prepositions. Now again you are using prepositions but you have to fill in the blanks and some words are given for helping us out. ठीक है? So like that I wake up early dash the morning and sleep late dash night. So what will come? I wake up early in the morning and sleep late at night. So in and at both will come. It is not necessary that जो ऊपर लिखा है वही लिखना है. उसमें से कोई वर्ड डबल बार भी यूज़ हो सकते हैं, 3 बार भी यूज़ हो सकते हैं. आपको सेंस बनाना है कि क्या लिखना है. We should act according dash rules. We should act according to the rules.
we should act according to the rules. She belongs dash a decent family. She belongs to a decent family. To, again we will write to. The child is afraid of darkness. बच्चा darkness से डरता है. Afraid of darkness. The rider fell off the horse. OFF, off. Horse से गिर गया. This off is different. The rider fell off the horse. Take the money. Take the money out of your pocket. There is a clue given here. So यहाँ पर out of will suit here. जो suit करता है we have to write the correct prepositions. Likewise now there is a tip of the day. This is important tip as usual. At, in, on, during, before, after, by, since, for, until, ये सब important prepositions है. Time को बताते हैं. They tell us time. Why they are telling? Because during, तब हो रहा है, उस समय हो रहा है. After, since, until. She is studying in this school since nursery. वो nursery से इस school में पढ़ रही है. Since. सो जब भी टाइम को बताना होता है हम आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग, ऑल, इन, एट, इन, ऑन, सिंस, अनटिल, ये प्रपोजिशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं बिकॉज दे डिनोट टाइम. नेक्स्ट इज़ ऑन, ओवर, अंडर, अबव, बिलो. ये जो सारे हैं प्रपोजिशंस दे टेल अस पोजिशन. ऊपर है, पीछे है, नीचे है, दाएं हैं, बाएं हैं. सो दीज आर ऑल पोजिशन को बताते हैं प्रपोजिशन दैट शो पोजिशन. And between is used between among two things. Among is used with more than two things. अगर हमें दो चीज़ों के बीच में बताना है तो हम between यूज़ करते हैं. द शीला इज सिटिंग बिटवीन रीता एंड सीता. दिस इज़ between इज़ यूज. और हम among तब बताते हैं जब हम दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं. शी इज़ सिटिंग among हर फ्रेंड्स. सो रीता इज़ सिटिंग among हर फ्रेंड्स. सो इस समय हमें among यूज़ करते हैं. तो बेसिकली हमें ये सारे वर्ड जो इन्होंने ब्रैकेट में बताए हैं दीज ऑल आर प्रपोजिशंस एंड वी शुड नो हाउ टू यूज़ देम. एट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस. जैसे वी गो टू स्कूल एट 8 AM. सो जो भी चीज़ें चाहे पीछे की पास्ट टेंस की हमें बताई जाती है, जब हमें उसमें ऐट लगा के बताया जाता है तो वो स्पेसिफिक प्लेस होती है, स्पेसिफिक जगह होती है. ऐट तब यूज़ होता है. वी लिव एट कमला नगर इन दिल्ली. हम कमला नगर में दिल्ली में रहते हैं, तो ये स्पेसिफिक जगह है, तो इसीलिए ऐट यूज़ होता है. फिर इन का भी यूज़ होता है. इन इज़ यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, मंथ्स, ईयर, सीजन. इन तब यूज़ करते हैं. जैसे ही वॉज बॉर्न इन 1991 एट गया इन बिहार. सो वो 1991 में गया में, बिहार में ही वॉज बॉर्न. सो यहाँ पर इन लगता है. इन एट कहाँ यूज़ होता है, ठीक है. सो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन कि जहाँ पर हमें वी गो टू स्कूल इन 8 AM, इन 8 AM नहीं आएगा, वहाँ एट 8 AM आएगा. एंड व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम एंड मंथ्स एंड ईयर्स, देन वील यूज़ एट. ओके. ऑन इज़ यूज्ड विद डेज एंड डेट्स. जब हम डेज और डेट्स की बात करते हैं, जैसे मंडे, या वी टॉक अबाउट नवंबर, दिसंबर, सो वी से कि शी वॉज बॉर्न ऑन मंडे. सो दैट टाइम वी यूज़ ऑन. सो देर इज़ अ स्पेसिफिक वर्ड, देर इज़ अ स्पेसिफिक प्रपोजिशन फॉर एवरीथिंग. फॉर टाइम, मंथ्स वी यूज़ एट, and we use in, and we use at for specific time and specific date. और हम on यूज़ करते हैं जब हम डेज़ या डेट बताते हैं, जैसे May 14th, मंडे, या हम कोई भी पर्टिकुलर चीज़ बता रहे हैं. सो इसी के बेसिस पे देर इज़ वन मोर एक्सरसाइज, एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज. I'll explain you few, we'll just discuss few of the sentences so that next rest of the sentences you do yourself. So what we'll do, I'll just explain you 10. There are 20 sentences, so 10 मैं आपको बोल के बताती हूँ so that आपको उसकी knowledge हो जाए. So first is he will stay here until you return. So what we have to do, हमें prepositions को circle करना है और उनका use observe करना है. So he will stay here until you return. So until is the preposition here. So we will circle until. Next it has been raining since morning. So since, you know that since is a preposition. So since we will be circling since. Next is you have been studying for 2 hours. So for here is a preposition. So we will be circling for.
So we'll be circling for. Okay, children, you have to do it like that. So I hope you understood it, and we'll just discuss other difficulties in your next class. So by this, preposition chapter is over. I'll provide you notes, and if you have any doubts, you can ask me in the next class. Thank you and have a nice day.